मुझे याद पड़ती है जो प्रॉफिट की भी पहली मस्जिद है अल-अक्सा मॉस्क, आजकल वहाँ पर पहरे लगे हुए हैं। जो रमज़ान में वहाँ पर इबादत के लिए जाना चाहते हैं उस पर प्रतिबंध है। रोज़ेदारों पर भी बंदिशें हैं कि उनकी तलाशी होगी। ऐसा ही बुरा दौर वक्त का अब देखने को मिला है। मुझे कई मरतबा ईरान जाने का मौका मिला और मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे 2-3 शिया दोस्त थे बचपन के दिनों में। अब से 40 साल पहले जब खुमैनी साहब का आंदोलन चला था, वो जो नारे लगते थे उसमें मैं भी उनके साथ रहता था। पिछले कुछ दिनों से जो वारदातें हुई हैं उसके बहुत सारे मैसेज हैं। आप में से कई दोस्तों को ये भी गलतफहमी हो सकती है या गलतफहमी कराई जा सकती है कि जैसे मिडिल ईस्ट के, वेस्ट एशिया के कुछ मुल्कों पर भी ईरान ने हमला किया। ये गलत है। मुझे कतर में, बहरीन में और कई मुल्कों में जाने का मौका मिला है। वहाँ पर अमेरिका के अड्डे बने हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कोई नहीं था, लेकिन भारत के और मॉरिशस के बीच में दियागो गार्सिया एक जगह है जहाँ पर ये अड्डा बना हुआ है। बहरीन का और कतर का जो अड्डा है नौसैनिक कार्रवाई का, जहाँ से सारी गतिविधियाँ हो रही हैं, तो अमेरिका के बहरीन के अड्डे पर हवाई हमला करना, मैं कोई ईरान की जवाब में की गई कार्रवाई को बहरीन के या कतर के खिलाफ नहीं देखता। इस तरह की भी गलतफहमियाँ पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है और पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया चुप बैठी हुई है इस जुल्म और जाति के खिलाफ। ऐसा तो कभी क्यूबा में जब वार चल रही थी, मुझे क्यूबा भी जाने का मौका मिला, ऐसा तो कभी तब भी नहीं हुआ। वियतनाम युद्ध हो रहा था, लाखों की तादाद में अमेरिकन लड़के और लड़कियां घर से बाहर निकलते थे युद्ध के खिलाफ। लेकिन पिछले 4-5, 2-3 दशकों में ख़ास तौर से जिसने भी थोड़ी बहुत आवाज़ इज्जत के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने की इच्छा जिसने जाहिर की है, उनके खामनाई जैसे ही नतीजे देखने को मिले हैं। चाहे सद्दाम हुसैन हो, चाहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति हों, चाहे कर्नल गद्दाफी हों, और अब ये ताज़ा वारदात हमारे सामने है। यूएनओ कहीं नहीं है। इसका गठन हुआ था इस काम के लिए कि ह्यूमन राइट्स को लेकर के 170-80 के करीब जो बच्चे मरे हैं वो 5 से 15 साल के बीच की लड़कियां हैं। कभी मानवता का इतना नंगा नाच आपने कभी देखा सुना हो? ऐसा ही फिलिस्तीन में हुआ था। 15 साल लगेंगे फिलिस्तीन के कूड़े को साफ करने में, बनाने की बात छोड़ दीजिए। लगभग 5 साल से 15 साल के बच्चे गूंगे हो गए, बहरे हो गए। उनको रात को अजीब किस्म के ख्वाब आते हैं। वो कहते हैं हमारी जीने की इच्छा नहीं है। ऐसी बर्बरता होती रही और पूरा मुल्क, पूरी दुनिया शांत बैठी रही। इससे ज़्यादा अफसोसजनक हिस्ट्री हमें तो सेकेंड वर्ल्ड वार का हिटलर का मंजर याद नहीं है, जिसमें काफ़ी कैजुअल्टी हुई थी निर्दोष और निरीह लोगों की। लेकिन तब की और अब की लड़ाई में बहुत फ़र्क हो गया है। अब बटन दबाते ही, पनडुब्बी के एक्टिव होते ही समुद्री जहाज़ डूब जाते हैं। अब बैठ कर के न्यूयॉर्क में उसके लिए अमेरिका को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वहीं से बटन दबाया, पूरा का पूरा शहर तबाह। तो ये बहुत बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के सामने, मानवता के सामने, इंसाफ पसंद लोगों के सामने आई हुई है। और ऐसा लगता है कि जैसे ईरान की बहादुर जनता ही इस लड़ाई को अकेले लड़ रही है। मैं वहाँ की जनता को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ट्रंप ने कहा कि नया नेता कौन चुनेंगे ये हम तय करेंगे। उन्होंने कहा पहले अपने मेयर तो चुन के दिखा दो। मेयर भी उनकी मर्जी का नहीं चुना गया, ट्रंप साहब की मर्जी का।
उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी राजधानी में मेयर है, तो आप कौन खलीफा बनेगा, कौन खामनेई साहब का उत्तराधिकारी बनेगा, ये आप कैसे तय कर सकते हैं। आज जो साथी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो इसके ऑर्गेनाइजर साथी हैं, मेरे साथी, मेरे मित्र जमशेद भाई का भी मेरे लिए हुक्म था मुझे कल भी यहाँ पर आना किसी और कार्यक्रम में, तो मैं अपनी तरफ से एक सोशलिस्ट मूवमेंट की तरफ से, पार्लियामेंटेरियन रहा हूँ उसकी तरफ से मैं अपनी सॉलिडरिटी एक्सप्रेस करता हूँ और आपके तमाम दुखों में मैं आपके साथ हूँ। इस तरह की घटना और इस तरह के कार्यक्रम पहले रमज़ान के दिनों में जेरूसलम में हुआ करते थे। मुझे फ़िलिस्तीन का जो ऑल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है पार्लियामेंटेरियंस का, मैं उसका मेंबर हूँ, उस नाते मुझे सब जगह जाने का मौका मिलता है। तामील हुक्म के लिए हाजिर हो गया हूँ। अभी जनाब किसी त्यागी साहब ने जो दुनिया की हकीकत आपके सामने पेश की है, हकीकत तो यही है कि इस वक्त सारी दुनिया अत्याचार और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के बजाय गूंगी बनी हुई है। सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर कोई अपना फ़रीज़ा नहीं अदा कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी अपने फ़राइज़ को फरामोश कर दें, भूल जाएं। बहरहाल हमारा ये मिली, दीनी, समाजी फ़रीज़ा बनता है कि जहाँ भी मानवता के ख़िलाफ़, इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठे या कोई अमल हो, हम उसकी भरपूर मुखालिफत करें। आज जो जुल्म इसराइल और अमेरिका के ज़रिए हो रहा है, हकीकत में वो जुल्म सिर्फ़ ईरान ही पर नहीं बल्कि हकीकत ये है कि ये वो ज़ालिम है जिन्होंने मानवता के ख़िलाफ़ एक अत्याचार का बाज़ार गर्म कर रखा है, जुल्म का बाज़ार गर्म कर रखा है। हम इन तमाम ज़ालिमों के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं और बिलख़ुसूस इस वक्त जो रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई रिज़वानुल्लाह तआला अलैह की दर्दनाक शहादत जो वाक़े हुई है, और ज़ाहिर है कि शहादत एक करामत है। आपने उनके बारे में सुना होगा कि अभी शब में हमारे बाबुलिल में ओखला विहार में जो कंडोलेंस मीटिंग थी उसमें आयतुल्लाह अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब ने जो बयान किया कि एक साल पहले, तकरीबन एक साल पहले की बात है कि उन्होंने फरमाया था कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ लेकिन मुझे एक डर लग रहा है, कहीं ऐसा न हो कि मेरी मौत बिस्तर पर हो या मैं कहीं अस्पताल में। और शायद अल्लाह ने अपने बंदे की ये दिल की आवाज़ सुनी और उन्हें यकीनन 86 साल के थे, 2, 4, 10 साल जितना भी वो ज़िंदा रहते, बहरहाल मरना हर एक को है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, लेकिन अगर अपनी तबई मौत से वो इस दुनिया से रुखसत होते, यकीनन उनकी याद होती, कुछ मजालिस हो जाती, फातिहा ख़ानी हो जाती। लेकिन तमाम इंसाफ पसंद लोगों के दिलों में जो उन्होंने जगह बनाई है, ये जगह न बन पाती। ये जगह सिर्फ़ उनकी शहादत की वजह से बनी है कि आज फ़कत शिया ही नहीं, सुन्नी ही नहीं, मुसलमान ही नहीं, हर इंसाफ पसंद, चाहे वो किसी कौम का हो, किसी मिल्लत का हो, किसी फ़िरक़े का हो, किसी भी समुदाय का हो, सब के सब इंसानियत के नाते, शराफ़त के नाते, जिस इंसान की रगों में ज़रा भी शराफ़त का, इंसानियत का खून पाया जाता है, आज वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है। हम भी इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे, इसलिए कि हमारा समाज करबलाई समाज है, करबला का मानने वाला, इमाम हुसैन से अक़ीदत रखने वाला, और इमाम हुसैन की ज़ात भी एक ऐसी ज़ात है कि वो ज़ात फ़कत किसी एक फ़िरक़े की नहीं है, बल्कि हकीकत ये है, कहा जाए कि बैनुल अक़वामी शहीद आज़म का नाम है हुसैन इब्न अली। लिहाजा जो हुसैन के रास्ते पर चलता है, यकीनन जिस तरह हुसैन ने मज़लूमियत के साथ शहादत कबूल की और उसके बाद में हर दिल में उनका घर हो गया, यूँ ही रहबर मुअज़्ज़म ने भी गोया शहादत हासिल करके हर दिल में अपना मकाम बनाया है। और तारीख़
ऐसे सूरमाओं को कभी फरामोश नहीं करती। रहबर मुअज़्ज़म कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। रहबर मुअज़्ज़म ज़िंदाबाद, रहबर मुअज़्ज़म पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। हमारी नहीफ सी आवाज़ पर लब्बैक कही और वो जज्बात जो आपके दिल में और क़ल्ब में मौजूद है वो आप सबके सामने रखें। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं बड़े ही इज़्ज़त और एहतराम से गुज़ारिश गुज़ार हूँ डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही साहब, नुमाइंदे वली फ़क़ीह हिंदुस्तान, कि वो तशरीफ़ लाएँ और यहाँ मोमिनीन के दिलों में जो दर्द है और तकलीफ़ है और आयतुल्लाह ख़ामनई रहबर मुअज़्ज़म साहब की इतनी अजीम जो शहादत है, ये हमारी आँखों के आंसू नहीं रुक रहे, हमारा दिल रो रहा है, हमारे बच्चे रो रहे हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, जहाँ जहाँ भी इंसानियत का दर्द रखने वाले अफराद मौजूद हैं, वो चाहे किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके दिल बेचैन हैं। उनके दिलों की तस्कीन के लिए, ढारस के लिए मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा अली जनाब डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मोमिन के क़ुलूब को अपने बयान से मनव्वर फरमाएँ। और जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना तक़ी साहब से मैं गुजारिश गुज़ार हूँ कि वो तर्जुमे के लिए तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। Distinguished guests, Your Excellencies, Ulama, Al-Afadil, my dear brothers and sisters, respected media persons, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I express my sincere thanks to the respected organizers of this very important event, which show their loyalty to the man who sacrificed himself for the dignity, for the humanity, for the freedom, for the justice. May Almighty Allah bless all of you. The martyrdom of Ayatollah Khamenei marks a profound and historic moment for Iran and for the free people of the world. His martyrdom is not merely the loss of political leader. It represents the departure of a spiritual guide for millions of people who saw in him a source of inspiration, resilience, and faith. My dear brothers and sisters, Ayatollah Khamenei was not only a statesman, he was a religious authority, a strategic thinker, and a guiding figure who led the Islamic Republic of Iran through some of the most complex regional and international circumstances of our time. For decades, he stood as a voice of dignity, independence, and resistance against domination. His life symbolized steadfast dedication in the face of immense pressure and a firm commitment to national strength and domination. From a political and philosophical perspective, he represented a unique combination: stability rooted in firm principles together with strategic flexibility in diplomacy and crisis
management. This balance allowed Iran to navigate many difficult moments while preserving its national identity and independence. It is important to emphasize that the Islamic Republic of Iran is not a personality-based system. It is a constitutional system built upon institution. Leadership in Iran is an institutional position governed by clear constitutional procedures. Therefore, continuity and stability are structurally ensured. Iran is a nation built upon faith, history, civilization, and sacrifice. Today, grief and strength work together in Iran, while the nation mourns the loss of prominent leader. It also draws strength from the very principle he represented. My dear brothers and sisters, the message to the world is clear. Iran remains stable. Iran remains strong. And Iran remains committed to constructive regional engagement and peaceful international cooperation. My dear brothers and sisters, we are facing two types of war at the same time. The first war, which is easier than the second one, is military wars. We are facing these wars, an aggression against our country. And we handle it. And the victory will be with us, because Allah is with us. But the second war is narrative war, which is expanded to all the world, is not limited only in our region and in our country. And everyone has a responsibility towards this narrative war, and he has taken out his responsibilities in his shoulder and do his duty and his responsibilities. My dear brothers and sisters, as the earlier, His Excellency, our Ambassador, Dr. Fathali mentioned that in this war, narrative war, it has been mentioned that the Ayatollah Khamenei has moved from his house or his office to another city, and no one knows where is he. And it has been said that he got refugees to other countries, and he got a lot of millions of dollars. But his martyrdom declared everything, that he was in his office, he was in his duties and his responsibilities. Never ever he left his office. Once I asked his security that why you are not moving our leader to another cities, or move him, build for him a bunker in the state basement, safe place. They said that never he accepted that. We asked him, please let us move from this office to another city. He said, if you could provide another city for 90 million Iranians, I am ready after 90 million Iranians to move from my office to another office, another city, another village.
They wanted to build bunker for him to be safe, but he refused. He said, could you build bunker for 90 million Iranians? They said, no, it's impossible. They said, okay, you cannot build it for me again also. Then he didn't leave his office, his house. He was on his duty, on his responsibilities, with his children, with his wife, with other people, and he was martyred at that place. And also, once I was emphasizing in some of his security that police try, because the era is not good era, and it's a very dangerous. They said, please, he said to us, if I am separated from my nation and from my people, I cannot be their leader. Because the Imam of Ummah, the leader of Ummah, should be the same and equal to all people. Can you find such leader in whole the world? I was very close to his son. He has 4 sons. None of them has his own house. They are living in the rented house. In spite, for 47 years, he was in high ranking of the authority in Iran. For 2 terms, he was president of Iran. For several years, or 2 or 3 terms, he was member of the parliament. And for almost 37 years, he was supreme leader of the Islamic Republic of Iran. But up to now, none of his son owns any house, any single square meter of the land. Even himself, he wasn't receiving salary from the government. Once I asked him, why you don't have salary, how it should be your expenditure, and how you spend and manage your life. He said, sometimes I receive some gift from my friends that I depend on that.